Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। SEBI permits stock exchanges with commodity derivative segment to introduce futures on indices. Snapping 4 days, a losing streak, equity benchmarks log marginal gains. Sensex closes at 39,046. Nifty settles at 11,692. And rupee appreciates 21 paise amid fall in Brent crude prices. सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव श्रेणी वाले शेयर बाजारों को सूचकांकों में फ्यूचर कारोबार शुरू करने की दी अनुमति। 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 39,046 पर और निफ्टी 11,692 पर हुए बंद। और ब्रेंट कच्चे तेल में गिरावट के बीच रुपए में 21 पैसे की मजबूती दर्ज हुई। In our top story, capital markets regulator SEBI today permitted stock exchanges with commodity derivative segment to introduce futures on indices. SEBI in a circular said the stock exchanges willing to start trading in futures on commodity indices are required to take prior approval for launching such contracts. The regulator has directed the stock exchanges to submit proposal with contract specifications and risk management framework for approval before launching any futures contract on an index. The circular comes after SEBI floated a consultation paper in January where it had proposed rules for product design for future on indices as part of large efforts to deepen the participation of institutions in the derivative segment. The SEBI directives are in line with recommendations of the Commodity Derivatives Advisory Committee. Then just looking at the futures on indices, we're basically looking at the value of the indices going up or down, and then you have these contracts where you are speculating on whether the price will go up or down. And we have seen that the futures and the options market has become much larger than the cash market. Do you think this decision on the part of SEBI is because of the fee proceeds from the contracts sold in the futures and options space? Yeah, it's actually much more than that. It's a logical step. If you remember, before this was regulated by another regulator, commodities. Then it was taken over by SEBI. So after sort of assimilating that whole thing, now it's actually trying to SEBI not only regulates but it also develops. Now what these commodity index futures, what it does is it's actually helping institutions have a more shall we say a price discovery process, overall price discovery process. It's helping that, and eventually what it will do is it will help even investors. I mean, eventually I would expect that to happen. If suppose you were to be an investor and say there's a fund or something like that, they're actually investing in the index and you get a financial product out of it. So that will not be for a new investor, but somebody who's already invested in a few areas and he wants to add. So that's something that eventually will happen. उदयन, अभी तक इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, हम इनकी बातें करते थे। अब कमोडिटी मार्केट्स को भी जो हम देख रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस बाजारों में उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंक्लूड किया गया और अब उनको डेरिवेटिव्स श्रेणी में भी फ्यूचर्स में कमोडिटी बाजार में कारोबार को परमिट किया जा रहा है। इससे आपको लगता है कि जो जिसे हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से गोल्ड, आपको लगता है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में सेविंग ज़्यादा जाएंगी लोगों की?
देखिए कमोडिटी फ्यूचर्स में दो 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 जगह थी, दो चीज़ें थी जहाँ पे लोगों की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। एक मतलब जितना मेरे को जानकारी है, एक व्हीट फ्यूचर्स और एक एनर्जी फ्यूचर्स। अब बाकी आप जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, आपके स्पाइसेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, शुगर वगैरह हैं। तो वहाँ पे एक पूरा एक बाज़ार खुलने का हिसाब किताब है। इवन एट द इंडेक्स लेवल उससे एक प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस का में मदद होती है, उससे इंडिकेटर्स मिलते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स वगैरह हैं, उनको आइडिया मिलता है। प्राइस हमारे यहाँ पे काफ़ी डिस्टॉर्शंस हैं। एक फ्री मार्केट का ये जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है, तो उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो कि एक बेहतर आपको एक ये बैकग्राउंड ये देना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे जो स्पेशली एग्री में जब भी फ्यूचर्स के बारे में बात होती थी, पहले एक लेगेसी ये आ रही है कि लोग कहते हैं स्पेकुलेशन होता है, इससे प्राइसेस बढ़ती हैं, इससे इन्फ्लेशन होता है। तो अब वहाँ से थैंकफुली वहाँ से हम हट के एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के ऊपर भरोसे वाले पैराडाइम की तरफ हम, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ कंज्यूमर्स का ही ना सोचें, प्रोड्यूसर्स का भी हित सोचें। जहाँ पे भी प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म मार्केट बेस्ड होगा, अगर आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, आपको उस हिसाब से करना है। अगर मार्केट बेस्ड नहीं है, फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा जो गैप उसके वजह से आ रहा है, उसको आप कैसा भरपाई करेंगे। But isn't it also meant for hedging purposes? Absolutely. You're trying to protect the price also by entering into a contract. But are these contracts are these to be settled for payment, or is there going to be delivery also like in forward contracts? I wouldn't be knowing that, unfortunately, but I'm sure it will be in line with other commodity markets, commodity future markets, and these are indexed, by the way. So like you have interest rate futures, then you have in other index futures, equity index futures. It will be like that here also, and that actually will help quite a bit. आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का। 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए प्रमुख घरेलू सूचकांक आज 0.2% की मामूली बढ़त पर बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की महत्वपूर्ण बैठक से पहले आज भारी उतार चढ़ाव भरे सत्र में निवेशकों ने सतर्कता से कारोबार किया। हालांकि कच्चे तेल की निचली कीमतों और रुपए में मजबूती के चलते संपूर्ण बाजार धारणा थोड़ी आशावादी हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार कंपनियों की आमदनी बहुत अच्छी न रहने, मानसून वर्षा की प्रगति धीमी रहने, कुछ कंपनियों द्वारा समय पर ऋण वापस ना दे पाने का सिलसिला जारी रहने और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार मतभेद को लेकर चिंताएं उत्पन्न होने के बीच बाजार का मौजूदा उच्च स्तरों पर बने रहना कठिन होता जा रहा है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 300 अंकों के दायरे में बढ़ने और घटने के बाद कारोबार की समाप्ति पर कुल 86 अंक बढ़कर 39,046 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 19 अंक बढ़कर 11,692 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। जहां मिड कैप सूचकांक 0.08% की बढ़त पर बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.42% की गिरावट दर्ज हुई। Snapping its 4-day losing streak, domestic equity benchmarks today gained modestly by 0.2%. Today investors traded cautiously in a highly volatile session ahead of the crucial US Fed meet. Overall, market sentiment, however, turned a bit optimistic in view of lower crude oil prices and strengthening rupee. According to experts, market is finding it difficult to sustain at elevated levels on the back of muted corporate earnings, slow monsoon season, continuous corporate defaults, and developing concerns of India-US trade disagreements. The BSE gauge swung nearly 300 points before settling 86 points higher at 39,046. The broader NSE Nifty closed with a gain of 19 points to close at 11,692. In the broader market, BSE Mid-Cap Index rose 0.08%, while Small Cap Index declined 0.42%. The market breadth was weak. On the BSE, 970 shares advanced and 1,560 shares declined. A total of 130 shares were unchanged. Top gainers in the Sensex pack included Vedanta, Coal India, ICICI Bank, Power Grid, HCL Tech and Bajaj Finance, rising up to 2.7%. On the other hand, Yes Bank was the biggest loser, cracking 5.9%, followed by Maruti, Asian Paints, Sun Pharma and HDFC Twins, shedding up to 2.2%. Shares of Jet Airways plummeted more than 40% after State Bank of India-led consortium lenders Monday decided to send the grounded Jet Airways to the National Company Law Tribunal NCLT, as they have not yet received any concrete proposal
for the airline. And on this, we're joined by Vinita Sharma, market analyst. Vinita ji, a very warm welcome to In Market Mantra. Thank you very much. Vinita ji, after the selling pressure that we saw yesterday, was there short covering in the market today, which was quite volatile? Market is sort of, trying to build up a base and try to find a comfortable position in sense of valuation as well as earnings. See, there are a lot of events coming, not only on the global sides like US Fed rate, which the meeting will be on from Tuesday, and then even on the local front we have your budget, and then how the markets will pan out, the corporate earnings also. So there are a lot of things on which the market is trying to position itself, how to move forward from here. And certainly there is a negativity in the sense of there are ongoing developments. There is a sense of negativity along with the corporate earnings which have reported little lower than expectation. विनीता जी, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि आज यूएस फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, कल उसके आउटकम जो है वो डिक्लेयर की जाएगी. इनफैक्ट इस सप्ताह बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है. क्या आपको उम्मीद है जो स्लो डाउन की थोड़ी सी एक स्थिति उत्पन्न हो रही है यूएस चाइना के ट्रेड वॉर को देखते हुए, उसको देखते हुए आपको लगता है कि इन बैंक्स का रवैया नरम रहेगा? क्या इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की उम्मीद की जा सकती है, और किस तरह से ये बाजार को अफेक्ट करेगा, बाजारों को? Certainly, the global जो growth है वो काफी lower side पे हो रहा है, and it's a big challenge for all the policy makers of globally, considering the US-China trade war and more locally, US-India now which have started. I think it's a very crucial position as to what the Fed will be. Whether they will lower the rates or not, and there are fair belief of cutting off interest rate, but then we'll have to wait and watch as to how the parameters finally set in. तो अगर वो रेट कट करते हैं या उनकी कमेंट्री डविश रहती है, नरमी वाली रहती है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, तो क्या उससे बाजारों को, हमारे बाजार को बढ़ावा मिलेगा? क्या एफआईआई ज्यादा हमारे बाजार की तरफ आकर्षित होंगे? डेफिनेटली वो एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है, बट अगर हम लोकल मार्केट देखें तो हमारा खुद भी हमारे वी हैव बजट विच विल बी एन इम्पोर्टेंट बजट आई थिंक फॉर, बिकॉज द मोदी 2.0 की जो फर्स्ट बजट होगी, it will be very important because what the government is thinking and how it is taking growth forward, whether it will be infrastructure based growth or it will be consumption based growth. So हमारा market maybe it will be volatile on what the US Fed does, but then even on our own policy front we are also standing at a cliff right now. So I would suggest the investors to trade with caution. They should only select companies which have good earnings growth and which have good management track record right now. Vinita ji, on taking a cue from what you just suggested for small investors, they should be careful when they trade in the market right now, especially with companies which have only buoyant financial performances. How concerned are you with the defaults that we are seeing with NBFCs and the exposure of mutual fund companies to these NBFCs and banks? Certainly these are concerning moments, and it's very important right now for the mutual funds like what HDFC did and today in saving the mutual fund investors. But then it's very important right now, even on the NBFC space, those companies which have a good backing, जिसके promoters के पास backing है और जो asset liability manage कर सकते हैं, जिनकी capacity है इस condition में भी fund raise करने की, they are the companies which will go forward with good growth in their hands. There are also companies. I think, and
in the housing finance, like many investors are really concerned as to, because there has been lot of asset liability management in housing finance companies per se. So in that case, one can resort to LIC Housing or HDFC, where the corporate base or the promoter base is very strong. What about companies which have issued debt securities to raise finance? Like, for instance, you mentioned about HDFC Asset Management Company. They have taken an exposure to non-convertible debentures of SL Group. So you're talking about the other type of debt securities where the debt is serviced by the profits of the company. Are there other companies which are disclosing just as clearly to investors as it's been required right now? Yeah, definitely. At this point where, there has been some corporates which have been defaulting, it is the necessity of the fund managers or the mutual fund to compensate the loss of what the investors are having. So these are the steps that we have to take, and it's important to save the small shareholders also. विनीता जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उन पे सबकी नज़र है, जो थोड़ी म्यूटेड रही. मॉनसून का जो शुरुआत है और प्रोग्रेस है वो स्लो है, एंड जैसा मेरे को एंकर कह रहे थे कि कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स के भी किस्से सामने आ रहे हैं और इंडिया यूएस ट्रेड भी डिसएग्रीमेंट भी इंटेंसिफाई कर रही है. इस पूरे सिनेरियो में आपको पॉजिटिव क्या ऐसे एंकर्स दिखाई देते हैं जिनके बल पर आपको लगता है कि बाजार में जो अभी के जो उच्च लेवल्स हैं वो शायद मेंटेन रहे आगे चलकर? देखिए, अगर हम बाजार का वैल्यूएशन देखें तो राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 24 टाइम्स ट्रेलिंग पी, और मार्केट में जो अभी निफ्टी की जो अर्निंग की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 22 to 25% है, ऑन द बैक ऑफ ऑल द बैंकिंग कंपनीज जिनके प्रोविजंस कम हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी काफी मतलब 2 times 3 times बढ़ जाएंगी. So a company which is reporting a 4,000 crore of profit because of higher provisioning, next year we might see that particular banking company reporting 13,000 crore of profit. So market is right now, आई थिंक अगर ये प्रोविजनिंग की जो बेसिस है वो अगर कम होती है, एंड विच हैज सीन सम रिडक्शन, one or two cases have more erupted in select companies, but overall if we see the provisioning has narrowed and people are giving more loan to better rated corporates. In that case, अगर ये play out होता है तो next year in FY20 we should have a 20% plus growth for Nifty earnings. बट देन जो अभी जो लास्ट टाइम जो अर्निंग्स आई थी उससे मैनेजमेंट से हमें बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं आई थी in most of the sectors, and even management were not very clear as to how demand will come up in various sectors. So this quarter earning will be very, very important as to how the management, they give us the guidance as to what their commentaries are, because they're the first hand from where we can, get the feel. So I think the banking companies, they should, the select corporate lenders, they should do good going forward. And from the budget point of view, we should have some infrastructure base growth going forward. So some of the construction and elite sectors might do better going forward. थैंक यू सो मच विनीता जी इस विस्तृत चर्चा के लिए. श्रोताओं, ये थी मार्केट एनालिस्ट विनीता शर्मा जो बाजार के आज के प्रदर्शन पर हमसे बातचीत कर रही थी. और स्टूडियो एक्सपर्ट से बाजारों पर डिस्कशन करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजार आज बढ़त पर बंद हुए, हालांकि कारोबार सीमित दायरे में ही हुआ. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय नीतिगत बैठक से पहले निवेशकों ने कारोबार से हाथ खींचना बेहतर समझा. फेड की बैठक आज होनी है और ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्याज दरों में कटौती की ताजा मांग के बीच हो रही है. हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अनुमान है कि केंद्रीय बैंक इस बार ब्याज दरें स्थिर रखेगा और इस वर्ष भविष्य में ब्याज दर में कटौती की तैयारी करेगा. हांगकांग का हैंगसेंग 1% की तेजी में रहा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त पर बंद हुआ. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% की बढ़त में रहे.
थे। हालांकि जापान का निकेई सूचकांक 0.7% की गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक 0.2% की बढ़त पर थे, जबकि जर्मनी के डैक्स में 0.5% की गिरावट चल रही थी। Moving on to the US market, the S&P 500 edged marginally higher yesterday as investors awaited a Federal Reserve meeting that is expected to lay the groundwork for an interest rate cut later this year. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both rose 0.1% and the Nasdaq Composite added 0.6%. Udayan, apart from the rate cut that everyone is hoping for, it is also the aggregate of credit which is extended by the central bank, especially to investment banks, so that they can invest in economies like ours, emerging economies. So it's the aggregate of credit which is equally important. Do you think that kind of stimulus is also something that's being looked at, just as what we are seeing with the European Central Bank, which is whose ECB president has said that yes, they'll provide stimulus. They're not talking about a rate cut, but stimulus. Yeah, that's possibly the biggest news of the day. That they're saying that the inflation is not going up as much as they would want. Here, of course, there are one or two things that are fairly important when we are discussing the markets. A lot will depend on what kind of view Fed takes. I mean, whatever emerges from the meeting and what the markets read from it. And eventually, as we are leading up to the budget, which is not very far away, that's what's going to be very important. It's going first, of course, in my mind, is the outcome of the Fed meeting. And then whatever information that we start getting about the budget, because there's very little doubt that there will have to be proposals where the government will have to first boost consumption demand, because that's the worrisome part of it, that there shouldn't be any slackening of that. And we are seeing some of the signs in the auto sector, for instance. It's been there for some But there's time. not been any transmission of the rate cuts announced by RBI by the retail banks themselves. They're offering loans at a very high rate of interest. What they might do, they might try to, the government might try to give some stimulus to the auto sector, and apart from that, it might look at construction, some other sectors where people start feeling a little more confident, maybe a little bit of tax hop. So overall, that would be the next big information source that could drive the market. In between, if there's a tension somewhere here and there, those are the things. But we are now sitting at we are sitting at 18th. So from now till next 3 weeks, these are some of the things that will influence the way markets move. उदयन, आपने बात करी कंजम्पशन को बूस्ट देने की। Right. अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स में शायद कुछ कंसेशंस दिए जा सकते हैं ताकि कंजम्पशन को बूस्ट मिले, और एमएसएमई सेक्टर को एक बात काफ़ी टाइम से चल रही है कॉर्पोरेट टैक्स को प्रोग्रेसिव करने की। सो आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर को खास बढ़ावा देने के लिए जो लेबर इंटेंसिव है कोई कदम उठाया जा सकता है? एमएसएमई के ऊपर काफ़ी कुछ होगा, बट क्या वो सारा कुछ बजट से होगा, मेरे को आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज दे पॉसिबली नीड मच मोर देन दैट। जहाँ तक मुझे ज़्यादा ये लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स में लीवे बहुत उतना ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो देयर हैज बीन अ टॉक ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे स्कोप मुझे उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है जितना आप इंडिविजुअल सेक्टर्स जो कि लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर जो है वो कई और सेक्टर्स के साथ जुड़े होते हैं, स्टील हो गया, फाइनेंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, तो वो खींच के अपने साथ काफ़ी कुछ आगे लेके चलते हैं। वैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है। तो मान लीजिए अगर आपने हाउसिंग में थोड़ा सा बूस्ट दिया जिससे डिमांड बढ़ सकता है, वो हम वहाँ पे हो सकता है। आप अगर होम लोन्स में आपने छूट ज़्यादा दे दी और थोड़ा सा बैंक्स को इनकरेज किया कि ताकि वो लेंडिंग बेहतर करे, तो उससे कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सनल इनकम टैक्स लेड बहुत ज़बरदस्त बूस्ट हो, कि उतनी लीवे शायद है नहीं सरकार के पास। और मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें तो 5.8% था जीडीपी ग्रोथ, और एग्रीकल्चर जो ग्रोथ था वो नेगेटिव रहा था। सो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पर जोर होगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर होगा बजट में? वो तो है ही, वो जरूर होगा। और क्योंकि इस सरकार ने हैज बीन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ध्यान दिया गया, तो वो एक ज़रूर रहेगा। इरिगेशन और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, अगर ये तीन आप प्लस मार्केट्स
एक्चुअली तो एग्री इस इन 4 इलाकों में ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ पिछले 5 साल में, पर यहाँ पे अगर एक बिग बैंग रिफॉर्म हो जाए तो हमारे एग्री में बहुत फर्क पड़ जाएगा, कृषि में हमारे। तो क्या ये बजट में ही निकलेगा? ये वक्त इतना ज़्यादा नहीं मिला है सरकार को उसका एक मसौदा तैयार करने के लिए, पर अभी लो हैंगिंग फ्रूट्स को लेने की कोशिश करेंगे, उससे इम्पैक्ट लाने की कोशिश करेंगे। और एक आपकी छोटी सी टिप्पणी, हमेशा यूएस चाइना के बारे में हम बात करते थे, ट्रेड टेंशन के बारे में, अब यूएस इंडिया की हम ज्यादा देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड टेंशन, इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये कितना कंसर्न का विषय है? बहुत ज़्यादा कंसर्न है नहीं। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप जब इसके बारे में बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो लीडर होते हैं जिस भी देश का। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होने वाली है, तो कई बार ये सब चीज़ें जो होती है पॉस्चरिंग होती है, आप नेगोशिएट करते हैं और वो क्लियरली बोलते हैं कि हम ये नेगोशिएट करने के लिए सब कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी एक जो डिप्लोमेसी का हिसाब किताब है, नेगोशिएशन के हिसाब किताब है, उस नज़रिए से देखना चाहिए, एक फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। आइए रुक करें करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की मजबूती से 69.70 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक से पहले कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और डॉलर में मंदी के चलते रुपए में 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूट गया। विदेशी मुद्रा के व्यापारियों ने कहा कि निर्यातकों द्वारा डॉलर की बिक्री और अन्य एशियाई मुद्राओं में मजबूती से भी रुपए को समर्थन मिला। Moving on to the oil market, oil prices today fell for a second day on signs that global economic growth is being hit by the US-China trade war, though losses were capped by Middle East tensions after last week's tanker attacks. Brent crude prices in intraday trade were trading around $60.90 per barrel. WTI prices were at around $52 per barrel when reports last came in. This is going to be a combined question because we are seeing that oil prices, if you compare it to prices last year, they have fallen quite a bit, and right now with the rupee appreciating to the dollar by 21 paise in today's trade itself, do you think lower oil prices is helping the rupee recover in the international currency market? Absolutely. That's what damaged us. That's what hurt us last year. It's not doing that, but we would obviously prefer that it comes to the $65 band. That's when things start getting better from us. Anything 65, prices being at $65 to a barrel or below is what works for us. So hopefully if it's going above that, as less as possible would work for us, and we could do with that these kind of prices because we've had a hard time, let's be honest, last year. So we could do with these kind of prices. We would take it. और हमारी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनके लिए भी जरूरी है कि एटलीस्ट प्राइसेस 60 तक तो रहे ही। हाँ, वो तो है, वो बोथ साइड्स वाला इशू जरूर है, पर ओवरऑल अगर आप किसी से पूछें कि आप 70 प्लस और 65 के पास कौन सा लिया जाएगा, तो हमारे सारे कैलकुलेशन 65-67 के आसपास ही होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो अगर 65 के आसपास रहेगा तो देन थिंग्स you don't get your numbers out of whack. ये एक important. Then briefly, do you think the quantum of oil supplies is being affected by what's happening in the Gulf with all kinds of security issues concerning the transportation of oil tankers from one point to the other? It hasn't got impacted yet. There's always going to be that threat. The other thing is, one of the things these guys have been doing is they have been talking about cuts. So it's not much of a concern at the moment. आइए रुक करें सराफा बाजार का। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 100 रुपए बढ़कर 33,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। मजबूत वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं में मांग उभरने से सोने में ये तेजी आई। चांदी की मांग भी औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं में बढ़ जाने से चांदी 130 रुपए महंगी होकर 38,220 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में हाजिर सोना बढ़त के साथ $1,344.90 प्रति आउंस पर और चांदी भी तेजी के साथ $14.96 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप आए उद्यम हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. SEBI permits stock exchanges with commodity derivative segment to introduce futures on indices. Snapping 4-day losing streak, equity benchmarks log marginal gains. Sensex closes at 39,046. Nifty settles at 11,692. And rupee appreciates 21 paise amid fall in Brent crude prices. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.